Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss about long-term financing decision. This block contains three units. Unit 10, financing through domestic capital markets. Unit 11, financing through global capital markets. And Unit 12, other modes of financing. So I have already discussed in previous class what do you mean by capital structure, types of capital structure theories, etc. So capital structure is the combination of debt, equity and other sources of finance. It is measured by the leverage. So types of capital structure I have already discussed in previous class. First is horizontal capital structure, consists 100% equity share and 0% of debt capital. Second one is vertical capital structure. It consists 90% of debt capital and 1 to 10% of equity capital. Third one is inverted pyramid capital structure. It consists 60% of equity share and 40% of debt capital. And last one is inverted pyramid shaped capital structure. It consists 60% of debt capital and 40% of equity capital. So next topic, I have already discussed capital structure theories. Four theories are very important for capital structure. First is called net income approach. It is propounded by David Durant. Second, net operating income approach. It is also propounded by David Durant. Third one is Modigliani and Miller approach. It is propounded by Modigliani and Miller. And fourth, traditional approach. It is propounded by Ezra Shulman. So today I am going to discuss Unit 10, financing through domestic capital market. And this unit contains certain objectives, that is provide an understanding of money market and capital market, highlight redeeming features of capital market, explain different method of raising funds by corporate through capital market. So structure of this units are introduction, money market, capital market, method of procuring finance, equity shares, rights shares, private placement, non-voting shares, preference shares, cumulative convertible preference shares, warrants, debentures, bonds, secured premium notes, public deposit, bank credit, and venture capital. So I am going to discuss financial market first, because money market, capital market is a type of financial market. So financial market are those markets where securities are traded. Securities means equity, bond, debentures, short-term securities, etc. So the financial market has two types. First is called money market and second is called capital market. Money market, those market where short-term securities are traded, like instrument of money market, like call money market, treasury bill, commercial paper, commercial bill, certificate of deposit, etc. It is always short term. That means below 1 year. And the other hand is capital market. Those market where long-term securities are traded. Long-term securities, that means above 12 months. So the instrument of capital markets are equity share, bonds, debentures, preference share, etc. So next one is capital market has two types. First is called primary market and second is called secondary market. Primary market where first time issue of equity share, that is IPO, initial public offering.
and second one is secondary market. It is also called Bombay Stock Exchange. So method of procuring finance. If you want to issue equity share, then certain criteria, certain procedures you will have to adopt. Like जैसे ही आपकी कंपनी को अगर इक्विटी शेयर की रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इक्विटी शेयर यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है. तो व्हाट यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स? इट इज अ ओनर्स फंड. It is investment by the owners to the capital, to the business. So equity shareholder is also called owner of the company, because यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क को ज्यादा वियर करता है, बिकॉज इक्विटी शेयर इज अनऑथोराइज्ड और नॉन कम्युलेटिव नेचर. So equity share at the time of liquidation of the company, equity share अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का लिक्विडेशन हो गया या आपकी कंपनी कोलैप्स्ड हो गई है, तो सबसे लास्ट में आपको ये पैसा मिलेगा, बिकॉज इट इज अनसिक्योर्ड. कुछ मामले में आप देखेंगे कि ये सिक्योर्ड अलग डिवेंचर जैसे प्रेफरेंस शेयर सिक्योर्ड हो सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर ऑलवेज अनसिक्योर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपकी कंपनी डूब जाती है तो वहां पे आपको पैसा नहीं मिलेगा. दैट इज द नेचर ऑफ अनसिक्योर्ड. सो सेकंड वन इज कंपनी आपको तभी डिविडेंड पे करेगी इक्विटी शेयर पे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा. अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड आपको पे नहीं करेगी, आप उस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर कोई भी क्लेम अपने डिविडेंड के लिए नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में. सो इक्विटी शेयर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा रखता है, सो इसीलिए इसे ओनर्स का टाइटल दिया गया है. अगर आप ओनर का टाइटल नहीं देंगे, दैट मीन्स वोटिंग राइट आप इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देंगे, तो वहां पे कोई भी इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा. सो नेक्स्ट वन इज राइट इश्यूज. राइट इश्यूज बेसिकली जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं या फिर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए ये इशू किया जाता है. सबसे पहले प्रायोरिटी राइट उनके एम्प्लॉइज के पास होता है कि राइट इश्यूज को सबसे पहले वही खरीदें या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीदे, एंड देन अगर वो परचेज नहीं कर पाते हैं तो वो उसको किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर देते हैं. नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड hybrid share, because the characteristics of equity share and debt capital both are involved in preference share. So preference share को hybrid share भी कहते हैं हम लोग, और preference share का एक टाइम लिमिटेशन भी होता है. आप टाइप्स जब इसका पढ़ेंगे, they are different types, they have different types like convertible preference share, non-convertible preference share, secured preference share, unsecured preference share, redeemable preference share, irredeemable preference share, cumulative preference share, non-cumulative preference share. So these are different types. So preference shares, अगर आप आज देखेंगे कि आज के डेट में किसी कंपनी का बैलेंस शीट जब आप देखेंगे तो उसमें आप लायबिलिटीज साइड में कैपिटल को जब देखेंगे तो वहां पे इक्विटी शेयर और डेट कैपिटल आपको जरूर देखने को मिलेगा. बट आप देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर आज के डेट में कोई भी इशू नहीं करता है, बिकॉज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व इन दिस शेयर. सो डेट कैपिटल का बेनिफिट भी मिल जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और इक्विटी शेयर का भी बेनिफिट मिलता है. इक्विटी शेयर का बेनिफिट ये है कि उसका वोटिंग राइट है. सो अगर कंपनी 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करती है तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आ जाता है. दिस इज अ टाइप ऑफ इक्विटी शेयर. सो नेक्स्ट वन इज कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. कम्युलेटिव मींस सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर लिया है और किसी ईयर कंपनी आपका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई, तो उस केसेस में आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट ईयर में जब कोई प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है
उसको वो पहले पे करती है एंड देन करेंट ईयर के जो इंटरेस्ट है उसको भी पे करती है। तो कम्युलेटिव मींस होता है कि जो प्रीवियस राइट वो रखे हुए हैं अपने इंटरेस्ट को पाने का। लेकिन अगर नॉन कम्युलेटिव आप देखेंगे, नॉन कम्युलेटिव मींस होता है कि जो एक बार आपको पे नहीं किया गया प्रेफरेंस शेयर पे जो भी इंटरेस्ट, तो वो हमेशा के लिए आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ करेंट ईयर का ही आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो डिफरेंट टाइप्स का है, जैसा कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, दैट मींस रिडीमेबल मींस कि एक मैच्योरिटी पीरियड इन्वॉल्व होगा प्रेफरेंस शेयर में। तो मैच्योरिटी पीरियड जिस प्रेफरेंस शेयर में इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल। दैट मींस कि कंपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद उसको वापस ले लेगी और आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देगी। So second type is irredeemable. Irredeemable that means कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, तो उसमें आपको फिर से कंपनी वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस नहीं करेगी। That is called irredeemable. So as per the Companies Act 2013, अब कोई भी कंपनी irredeemable प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, बिकॉज कि इसमें बहुत ही ज्यादा फ्रॉड केसेस हुआ था। तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कैपिटल को रेज करने का ऑप्शन है, बट इसमें अब कंपनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, बिकॉज की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सो नेक्स्ट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मींस कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप कन्वर्जन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। सो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मींस, नॉन कन्वर्टेबल मींस कि ये कन्वर्जन नहीं होगा। जिस फॉर्म में इसको इशू किया गया था दैट इज प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में इशू किया गया है, तो वो कभी भी कन्वर्जन नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर के तौर पे ही आपको वो रिडीम होगा या वापस मिलेगा। सिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर दैट मींस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट होगा कि वो सबसे पहले आप पाएगा पैसा। यानी कंपनी जब लिक्विडेशन स्टेज में जाती है तो कंपनी के सारे एसेट को सेल कर दिया जाता है। सेल करने के बाद जो भी कलेक्शन होता है उसमें सबसे पहला जो पेमेंट होता है वो सिक्योर्ड का होता है। तो जब भी आप परचेज करने जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अगर अनसिक्योर्ड है दैट मींस कि वो लिक्विडेशन के समय में सबसे लास्ट में पेमेंट होगा और वहां तक कंपनी के पास फंड अवेलेबल नहीं होती है। जो आपने प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स पढ़ा एज इट इज, वही डिवेंचर का भी टाइप्स आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो डिवेंचर क्या, व्हाट यू मीन बाय डिवेंचर? डिवेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट to help to raise the capital of the company. It has a fixed rate of interest and definite period. So the types of debenture are: first, redeemable debenture, irredeemable debenture, convertible debenture, non-convertible debenture, secured debenture, unsecured debenture. So these are the types of debenture. सो बॉन्ड्स गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है। आजकल पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बॉन्ड्स से आपको इशू कर रही है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है या फिर गवर्नमेंट और पब्लिक कंपनी के बीच का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस तरह का, तो वहां पे बॉन्ड इशू आप कर सकते हैं। इट हैज अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड डेफिनिट पीरियड। सो this chapter include I have already discussed in previous class, that is unit block 2 and unit 3, evaluating investment proposal. Evaluating investment proposal I have already discussed in previous class. How to evaluate project, how to select profitable project, why the management of the company. So evaluating investment proposal, at first technique is called payback method or payback period. So payback period
how to compute payback period of a project. So the payback period formula is cash outflow divided by net cash inflow. कैश आउटफ्लो मीन्स कि आपने किसी प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद नेट कैश इनफ्लो आपको कितना आया है। दैट मीन्स कल हमने एक एग्जांपल आपको बताया था कि आप किसी एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और 20,000 रुपीस आपको ईयरली कैश इनफ्लो हो रहा है। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ पेबैक पीरियड? पेबैक पीरियड, so net cash outflow, that is 1 lakh divided by net cash inflow per year, that is 20,000. 1 lakh divided by 20,000, that is 5 years. तो आपका जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल के अंदर में वो रिकवर कर जाएगा, वो आपका पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर करवा देगा। तो सेकंड वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। Present value of expected future cash flow discounted at the appropriate cost of capital minus the cost of the investment. So आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन जो करेंसी का पावर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है और जो प्रोडक्ट होते हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं। सो आज आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, सपोज 2 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट किया है और एस्टिमेटेड है कि एवरी ईयर आपको उसमें 30,000 या 40,000 आपको कैश इनफ्लो आएगा। लेकिन आज के डेट में जो 40,000 है वो कल नेक्स्ट ईयर में वो 40,000 नहीं रहेगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण 40,000 वो डिक्रीज कर जाएगा, मे बी वो हो सकता है 25,000 या 30,000 ही आपका रह जाए। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड फैक्टर को कंसीडर करता है कि इन्फ्लेशन के कारण आपकी करेंसी में कितना डिक्रीमेंट होगा। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब 5 साल में सपोज हम डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो की बात करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपीस का किया है और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो मेरा जो है वो 2,50,000 है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैं डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो को 2,50,000 पुट करूंगा माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2 लाख। सो 50,000 यहां पे आपका जो प्लस पॉजिटिव जो 50,000 साइन आ रहा है, दैट मींस कि प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का रिजल्ट आपका निगेटिव आ रहा है, दैट मींस कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख रुपीस और नेट कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड नेट कैश इनफ्लो आपको आ रहा है 1,80,000, दैट मींस 20,000 वहां निगेटिव रिजल्ट है। निगेटिव रिजल्ट मींस कि प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल भी हो जाता है आपका अमाउंट, दैट मींस कि डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज इक्विवेलेंट टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो भी आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन हो जाएगी। सो एनपीवी इंडिकेट करेगा आपको कि अगर पॉजिटिव है देन आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर निगेटिव और इक्वल है तो उस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज that rate of return where net present value is equal to 0। जहां पे एनपीवी आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा वही जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसके थ्रू भी हम प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कब 0 हो जाएगा और कितने सालों के अंदर वो मैं रिकवरी कर पाऊंगा अपने आउटफ्लो को, अपने प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन को। So next method is profitability index. It is a very important method for evaluating the proposal. So profitability index is equal to discounted cash outflow divided by discounted cash inflow.
दैट मीन्स कि अगर आपका इनफ्लो बड़ा है आउटफ्लो से, देन आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज ये प्रॉफिट नहीं देगा, ये आपको निगेटिव इंपैक्ट देगा, आपकी कंपनी को लॉस की ओर आगे ले जाएगा। सो नेक्स्ट यूनिट इज 6 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। The objective of these units are to provide an understanding of how the implementation system is designed, to explain concept of control and its various types, to focus on types of control process, to throw light on designing of control system. So structure of this unit are introduction part, designing of the monitoring system, how to collect data, information needs and the reporting process, report types, project control, project types of control process, cybernetic control, go no go control, post control, design of control system, control of creative activities, progress review, personal reassignment, and control of input resources. So introduction of this units are: monitoring is collecting, recording and reporting information concerning any and all aspect of project performance that the project manager or others in the organization wish to know. So monitoring is very important tools to succeed the project. कोई भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल के लिए आपको कंट्रोलिंग बहुत ही जरूरी है। विदाउट कंट्रोलिंग आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिल सकता है। सो मैनेजमेंट टूल्स में कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑन द स्क्रीन इज डिजाइनिंग ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम। So fifth step, 5 steps involved in this monitoring system. The first step is setting up any monitoring system is to identify the key factors to be controlled. Clearly, the project manager wants to monitor performance, cost and time, but must define precisely which specific characteristics of performance, cost and times should be controlled and then establish exact boundaries within which control should be maintained. So पैरामीटर आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा की फैक्टर दैट मींस लिमिटिंग फैक्टर, कि हमारे प्रोडक्शन को कौन इंटरप्ट करता है, हमारे प्रोसेस को कौन इंटरप्ट करता है, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है लैप्स करेगा, प्रॉफिट मिनिमाइज होगा। सो की फैक्टर को आपको आइडेंटिफाई करके उस पे प्रॉपर मॉनिटर करना होगा, की फैक्टर को मेंटेन करना होगा, मैनेज करना होगा। So next, the information to be collected must be identified. आप की फैक्टर के अगेंस्ट जो भी कलेक्शन आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो भी किया है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। दिस में कंसिस्ट ऑफ अकाउंटिंग डेटा, ऑपरेटिंग डेटा, इंजीनियरिंग टेस्ट डेटा, कस्टमर रिएक्शंस, स्पेसिफिकेशन चेंजेस एंड द लाइक। The fundamental problem in this regard is to determine precisely which all of the available data should be collected. Therefore, the first task is to examine the project plans in order to extract performance, time and cost goals. These goals should relate to some fashion to each of the different level of details. That is, some should relate to the project, some to its tasks, some to the work package, and so on. Next topic is how to collect data. In terms of statistics, you have built a study primary data and secondary data. The primary data which is collected through directly by the investigator, and secondary data, that data which is collected by the third party. But in case of controlling of project, a large proportion of the data collected may take one of the following forms, each of which is suitable for some types of measures: frequency counts, raw numbers,
subjective numeric rating, indicators, verbal measures. These are the method to collect the data. So next one is benefits of detailed report. Obviously आप लोग डिटेल्ड रिपोर्ट, अगर हम कंपनी की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है, डिटेल्ड रिपोर्ट होता है, वो हर एक स्टेक होल्डर के लिए बेनिफिशियल होता है. तो हु इज अ स्टेक होल्डर? दोज पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंपनी. So benefits of detailed reports. The first, mutual understanding of the goals of the project. प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी पर्सनल है, उनको गोल के बारे में नॉलेज होगा, गोल के बारे में जानकारी होगी. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना बहुत ही जरूरी है, और ये तभी हो सकेगा जब डिटेल्ड रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगा. So second one is awareness of the progress of parallel activities and of the problems associated with coordination among activities. So parallel activities के थ्रू आपको काम करना होगा जिससे कोऑर्डिनेशन बना रहे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. और डिटेल्ड रिपोर्ट्स ये बताती है आपको कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, उनका क्या आगे का प्रोसेस होगा, वो सारी जानकारी उस डिटेल्ड रिपोर्ट में अवेलेबल होती है. सो थर्ड वन इज मोर रियलिस्टिक प्लानिंग फॉर द नीड्स ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टास्क टू वन अनदर एंड टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट. दैट मीन्स आपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पढ़ा होगा कि किसके अंदर सबऑर्डिनेट कौन है, उसके अंदर में कौन होगा, कितना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितना उनकी पावर होगी. तो ये सारी चीजें डिटेल्ड रिपोर्ट में आपको अवेलेबल होगा, जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि किसके अंदर में कौन काम करेगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी. So next one is early warning signals of potential problems and delays in the project. So it is very important tools for controlling overall project process. So detailed reports एक tools की तरह यूज होता है जो आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा. So next one is minimizing the confusion associated with change by reducing delays in communicating the change. डिटेल रिपोर्ट जितना आपका इंफॉर्मेटिक होगा उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा, उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन को मिनिमाइज करेगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देगा. फास्टर मैनेजमेंट एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अनएक्सेप्टेबल और इनएप्रोप्रिएट वर्क. हायर विजिबिलिटी to top management, including attention directed to the immediate needs of the project. So keeping the client and other interested outside parties up to date on project status, particularly regarding project milestone and deliverables. So next topic on the screen is project control or nature of control. आपने जरूर कंट्रोल पढ़ा होगा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट कॉल. दैट इज पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. सो कोई भी प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट किया है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंट्रोलिंग को आपको करना होगा. आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो एस्टिमेटेड जो आपका आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिल सकता है. सो ओवरऑल कंट्रोलिंग बहुत ही जरूरी है प्रोजेक्ट के ऊपर, कि जैसा आपने फ्रेमवर्क किया था प्रोजेक्ट का उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है. टाइम टू टाइम आपको इसका रिव्यू भी करना होगा. सो नेचर ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल इज द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल एंड रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू. इट इज ऑल्सो द लास्ट एलिमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन साइकिल of planning, monitoring, controlling. So implementation में आप सारा रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना चालू कर देते हैं. इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही आपको कंट्रोलिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा,
क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे वर्कर्स वहां पे हो सकता है कंफ्यूज हो किसी बात को लेकर, तो वहां पे आप जब कंट्रोल अपना टूल्स काफी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वहां पे कोई भी कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। Objectives of controls are: first, the regulation of result through the alteration of activities. Second one is the stewardship of organizational assets. So types of control. तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिजिकल एसेट कंट्रोल होता है। दैट मींस फिजिकल एसेट मींस जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिजिकल एसेट कंट्रोल रिक्वायर्स of the use of these assets. It is concerned with the asset maintenance, whether preventive or corrective. So second one is human resource control. That means employees and human being जितना आपकी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, जितना भी उस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोलिंग आपकी होनी चाहिए। That is also called human resource control. Human resources also need both regulation and conservation. So stewardship of human resources requires controlling and maintaining the growth and development of people. So financial resource control, that is human resource, and next one is financial resource. Financial resource, that means capital, fund, cash, marketable securities, etc. Though accountants have not succeeded in developing acceptable methods for human resource accounting, so their work or techniques for the conservation and regulation of financial resources have most certainly resulted in excellent tools for financial control. आपने ज्यादातर देखा होगा कि जितने भी फ्रॉड का मामला होता है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड ही होता है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल रिसोर्स कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट के लिए। बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे दिनों में आपको शॉर्टेज ऑफ कैपिटल झेलना पड़े या फिर आपको ह्यूज लॉस इनकर हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। आपका किस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्स पे कंट्रोलिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर फ्रॉड होगा या नहीं। Next one is cybernetic control. Cybernetic or a steering control is by far the most common type of control system. Cyber is the Greek word from helmsman. The key features of cybernetic control is its automatic operation. So next one is go no-go control. Go no-go controls take the forms of testing to see if some specific precondition has been met. This type of control can be used on almost every aspect of a project. For many facets of performance, it is difficult to know that the predetermined specification for project output have been met. Post control, सिर्फ आपका प्री कंट्रोल ड्यूरिंग द कंट्रोल जरूरी नहीं है, बल्कि आपको पोस्ट कंट्रोल भी करना जरूरी होगा किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो कंट्रोल प्रोसेसेस के टाइप्स में एक पोस्ट कंट्रोल भी आप देख रहे होंगे ऑन द स्क्रीन। पोस्ट कंट्रोल आल्सो पोस्ट परफॉर्मेंस कंट्रोल और पोस्ट प्रोजेक्ट कंट्रोल्स आर अप्लाइड आफ्टर द फैक्ट। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आउटपुट आ चुके हैं उनके ऊपर भी आपको कंट्रोल होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 7, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दिस यूनिट हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव that are first provide an overview social cost benefit analysis. Second one is explain the concept of market efficiency. Third one is explain the conceptual foundation of SCBA. Explain the pricing mechanism in absence of market price. So structure of this units are introduction, concept of market efficiency, market failures,
types of SCBA, basic steps of SCBA, conceptual foundation of SCBA, and valuation methods. So introduction of these units are the starting point of any project policy. Formulation is the economic analysis involving estimation of cost and benefits. The cost and benefits are those factors which is strongly influence to the project efficiency. Estimation of cost and benefits is core of any economic analysis and is the natural way in which individuals and commercial enterprises take decision before allocating resources for any economic activities. So किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर रिसोर्सेस को आप इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करना बहुत ही जरूरी है. सोशल कॉस्ट बेनिफिट क्या होगा, कितना मिलेगा, किस प्रोजेक्ट को करने से हमें कितना बेनिफिट होगा, दैट्स मैटर. In SCBA, in addition to financial perspective, we incorporate the following aspects. So impact on input and output market. Shadow pricing using market price or benefit transfers. Use of non-market valuation techniques to account for missing or incomplete markets where price is not a true indicator of the value of transaction. So concept of market efficiency. What do you mean by market efficiency? So the objective of any economic system is to generate wealth, welfare, and employment for the society in which it operates. The economic system uses economic resources which are scarce, having multiple claimants, and allocated either through free market mechanism or through government intervention. So इकोनॉमिक सिस्टम मार्केट इफिशियंसी मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस की स्कार्सिटी है, इकोनॉमिक रिसोर्स आपको लिमिटेड है और उस लिमिटेड रिसोर्सेस में से आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और आपको क्लेमेंट्स एंड एलोकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से देखना होगा और उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी करती है कि अगर आपका रिसोर्सेस कुछ ऐसा स्कार्स रिसोर्सेस है जो आगे चल के काफी ज्यादा डेंजर लेवल में जा सकती है वो पोजीशन उसका, तो उस समय गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन कर सकती है आपके ऊपर, वहां पे भी रोक लगा सकती है. The market mechanism is often a better way for effective utilization of resources, whereas government intervention is used for equitable allocation and guiding economic toward a particular path and envisaged in economic policy of the government. Market failure. That is market failure, few of the reasons which lead to government intervention are. अब मार्केट फेल्यूर में ये देखेंगे कि बहुत तरीके का गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया है या इंटरप्शन हुआ है या आपने स्कार्स रिसोर्सेस को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया और मार्केट में आप फेल हो चुके हैं. तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण होते हैं, जैसे मार्केट फेल्यूर्स, इंप्रूविंग द एलोकेशन ऑफ स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वेलफेयर मेजर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिसोर्सेस एंड वेलफेयर गेन्स. To harness the potential of unused resource requiring huge capital outlay and are often the project with long gestation periods, meaning no economic return is there for quite a bit of time. The major reason for market failures are market तो ये जो फैक्टर्स है अगर इस पे ठीक तरीके से आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो ये फैक्टर्स आपके मार्केट फेल्यूर्स का कारण बनेगा. आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा डेवलप नहीं करेगा, आपके प्रोजेक्ट को इनिशिएशन अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट को डायरेक्टली हिट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक ऑन द स्क्रीन इज टाइप्स ऑफ SCBA, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस.
The first is ex ante SCBA. This type of SCBA is conducted before the start of the project. The findings of this type of SCBA is input for authorities to make decision about the project regarding continuous or otherwise and about the quantum and timing of allocation of funds and resources. So this is very important types of SCBA. And second one is ex post SCBA. This type of SCBA is undertaken after the completion of the project. The timing of undertaking this type of SCBA is crucial, as some of the outcomes, either positive or negative, will only be evident after a lag of time. In media res SCBA, next types of SCBA. This type of SCBA is planned and conducted midway during the project policy under investigation. This type of SCBA has two-way benefits. And last one is comparative SCBA. This type of SCBA compares the findings of ex ante analysis with that of ex post or in media res SCBA. So basic steps of SCBA, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का बेसिक स्टेप क्या होगा, उसको कैसे हम लोग इनिशिएट कर पाएंगे, किस तरह से उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, दैट्स इट. तो स्टेप फर्स्ट इज डिफाइन पॉलिसी एंड काउंटर फैक्चुअल्स. सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई व्हिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेन्स एंड व्हिच लॉसेस. कौन सी सोसाइटी को गेन होगा, कौन सी सोसाइटी अपना कुछ लॉस करेगी, किस सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, क्लासिफाई देम एंड सिलेक्ट मेजरमेंट इंडिकेटर्स. यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स को डिफाइन करना होगा कि आपके इंडिकेटर्स क्या होंगे, मेजर इंडिकेटर्स कौन होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट क्वांटिटेटिवली ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. Next step is monetize all impacts. Step 6, discount benefits and cost to obtain present values and compute net present value. So it is a technique to evaluate the project and social cost benefit analysis also. So step 7, perform sensitivity analysis. Next block is 3, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी. अभी जो आप पढ़ रहे थे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर सर्टेनिटी था, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी. सो दिस ब्लॉक हैज 2 यूनिट्स. यूनिट 8, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी 1, एंड यूनिट 9, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? So first, I am going to discuss Unit 8, Investment Decision Risk and Uncertainty first. Objective of this units are to examine the relevance of risk in capital budgeting decision. Second one is to understand the application and usefulness of capital asset pricing model in capital budgeting decisions. To study the certainty equivalent and risk adjusted discounting rate approach. A structure of these units are introduction, capital asset pricing model, measuring betas and capital asset, stability of betas over time, business and financial risk, what determines asset betas, discounted cash flow approach. So introduction of these units are smart financial managers adjusted for risk in capital budgeting. They realized intuitively that if other things being equal, risky projects are less desirable than safe ones. Therefore, they demanded a higher rate of return from risky project, or they based their decisions of conservative estimates of the cash flows. You can use the capital asset pricing model as a rule of thumb for estimating the company's cost of capital. So capital asset pricing model is very important tools to evaluate the project. Or capital asset pricing model is a technique to define the cost of equity. So ultimately it affects to
value of the firm. So capital asset pricing model approach is used to estimate risk adjusted amount discount rate for making investment decisions. It is a theory about how the price of risky financial assets are determined in the capital market. So जहां तक अगर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की हम बात करें तो यहाँ पे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की टेक्निक यूज करता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके के रिस्क को भी इन्वॉल्व करता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। फर्स्ट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन रिस्क, सेकंड इज कॉल्ड नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मींस कि आप पोर्टफोलियो के थ्रू रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। बट नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क आप किसी पोर्टफोलियो के थ्रू उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रिस्क जनरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक पॉलिटिकल, social, legal, etc. The capital asset pricing model is a financial model that calculates the expected rate of return for an assets or investment. So CAPM does this by using the expected return on both the market and the risk-free asset, and the assets correlation or sensitivity to the market, that is also called beta. There are some limitations to the CAPM, such as making unrealistic assumptions and relying on a linear interpretation of risk versus return, because it is a technique of risk-return trade-off. Despite its issues, the CAPM formula is still widely used because it is simple and allows for easy comparison of investment alternatives. So for instance, it is used in conjunctions with modern portfolio theory, MPT, to understand portfolio risk and expected return. So CAPM and beta, you can see on the screen, the beta of a potential investment. What do you mean by beta? The beta of a potential investment is a measure of how much risk the investment will add to a portfolio that looks like the market. If a stock is riskier than the market, it will have a beta greater than 1. If a stock has a beta of less than 1, the formula assumes it will reduce the risk of a portfolio. So a stock's beta is then multiplied by the market risk premium, which is the return expected from the market above the risk-free rate. The risk-free rate is then added to the product of the stock's beta and the market risk premium. The result should give an investor the required return or discount rate that they can use to find the value of an asset. So problem with the CAPM, unrealistic assumptions. The certain assumptions are not realistic. So several assumptions behind the CAPM formulas have been shown not to hold up in reality. Modern financial theories rest on two assumptions. First is called securities market are very competitive and efficient. That is, relevant information about the companies is quickly and universally distributed and absorbed. These markets are dominated by rational, risk-averse investors who seek to maximize satisfaction from returns on their investments. So estimating the risk premium, the market portfolio used to find the market risk premium is only a theoretical values and is not as asset that can be purchased or investment is as an alternative to the stock. Most of the time investor will use a major stock index like the S&P 500, Standard & Poor and 500, to substitute for the market, which an imperfect comparison. The most serious critique of the CAPM is the assumptions that future cash flows can be estimated for the discounting process. If an investor could estimate the future return of a stock with a high level of accuracy, then the CAPM would not be necessary. So assumptions of the CAPMs are the following are assumptions made by the CAPM model. First, all investors are risk averse by nature. Second one is investors have the same time period to evaluate information. Third one is there is unlimited capital to borrow the risk-free rate of return.
Investments can be divided into unlimited pieces and sides. There are no taxes, inflation, or transaction cost. Risk and return are linearly related. सो कुछ एजम्पशंस इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ आज के भी डेट में उतने ही ऑथेंटिक है जितना पहले थे, बट कुछ ऐसे एजम्पशंस हैं जो आज के डेट में उतने ऑथेंटिक नहीं है. So next unit is unit 9, project evaluation under risk and uncertainty. The objective of this units are to provide conceptual understanding of a state of certainty, risk and uncertainty, to explain various methods of measuring project risk. So structure of this study are concept of certainty, risk and uncertainty, measurement of project risk, probability distribution, sensitivity analysis, scenario analysis, Monte Carlo simulation, decision tree analysis, game theory, expected utility approach, the expected utility model. So first analysis is sensitivity analysis. This is very important analysis for uncertainty involved in project. So project analysis is based on cash flows. Cash flows means cash inflows and outflows. Both are included in cash flows. Cash flows are uncertain and are based on assumptions. Changes in the assumptions can change the decision sensitivity. Analysis examines the sensitivity of a decision rule, that is NPV, net present value, internal rate of return, etc., to change in the assumptions underlying a project. The steps of sensitivity analysis are: do a base case analysis based on expectation about the future, identify key assumptions in the base case analysis. This could be firm specific revenue levels, operating costs, etc., or macroeconomics, tax rates, inflation, etc. Change one key assumptions at a time and estimate the decision criterion. Summarize the impact of changing the key assumptions of the decision criterion in the form of a level of graph. Decide whether or not to take the project based on the risk or changes in the key assumptions. So next one is scenario analysis. Scenario analysis is the process of estimating the expected value of a portfolio after a given period of time, assuming a specific changes in the values of the portfolio securities or key factors take place, such as a change in the interest rate. Scenario analysis is commonly used to estimate changes to a portfolio's value in response to an unfavorable event and may be used to examine a theoretical worst case scenario. So scenario analysis is the process of estimating the expected value of a portfolio after a given changes in the values of key factor take place. So both likely scenarios and unlikely worst case events can be tested in this fashion, often relying on computer simulations. Scenario analysis can apply to invest a strategy as well as corporate finance. So next one is decision tree analysis. This is a presentation of the decisions and possible outcomes with probabilities at each stage of a multi-stage project. So outcome is break the project into clearly defined stage, list all possible outcome at each stage, specify probabilities of each outcome at each stage, specify the effect of each outcome and expected project cash flows, evaluate the optimal action to take at each stage in the decision tree based on the outcome at the previous stage and its effect on cash flow and discount rate, beginning with the final stage and working backwards. Estimate the optimal action to take at the very first stage based on the expected cash flows over the entire project and all the likely outcomes weighted by their relative probabilities. So next and last one is game theory. Since game theory can be used as a technique for dealing with cases of complete ignorance of the initial probabilities or possible outcomes, the reader might be inclined to pitch his hopes for useful guidance a little higher. Again, he is likely to be disappointed.
But before pronouncing judgment, we shall illustrate with one or two simple example the relevant techniques known as two-person zero-sum game. So called for the rather obvious reason, first that the game is played between two-person or groups, one which may be nature, and second that there are no mutual gains to be made. The gains to one party being exactly equals to the losses suffered by the other party. So next block is block 4, long-term financing decision. And I have already discussed at first financing through domestic capital market, and the objective are very clear, and the structure of the money market, capital market, methods of procuring finance, equity share, rights share, private placement, non-voting shares. Non-voting shares are that share which has no voting right. जो वोटिंग राइट आपका नहीं रखता है, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जैसे बोनस शेयर्स, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि वोटिंग राइट नहीं रखते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वोटिंग शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन प्रीवियस क्लास, एंड कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर डिस्कस कर चुका हूं. वारंट्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक क्रेडिट, वेंचर कैपिटल. Basically, venture capital is a very essential concept for raising the capital for a company. अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, बट कैपिटल की कमी के कारण आपके पास आपका कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, मार्केट में वो चल नहीं रहा है, तो वहां पे वेंचर कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक वेंचर कैपिटल, आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका बिजनेस क्या है, आपका मार्केट डेफिनेशन क्या है, आपके बिजनेस का मार्केट डेप्थ कितना है, आपके प्रोजेक्ट से मार्केट कितना लीड ले सकता है आपका प्रोजेक्ट, कितने कस्टमर को आप जोड़ सकते हैं. ये सारे इवैल्यूएशन करने के बाद जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट दैट मींस जो कैपिटल जिनके पास अवेलेबल है, तो आपके प्रोजेक्ट से अगर वो अट्रैक्ट होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, आपका प्रोजेक्ट मार्केट सर्वाइवल कैपेसिटी काफी अच्छा रखता है, आपके प्रोजेक्ट से मार्केट में प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, देन वो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर देंगे, और फाइनेंस के अगेंस्ट में वो सम इक्विटी शेयर, आपकी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्ड करेंगे. लाइक अगर वो सपोज अगर 1 करोड़ रुपए का आपको फाइनेंस आपको करवा रहे हैं कंपनी के अंदर, तो 1 करोड़ के अगेंस्ट में आपका कुछ इक्विटी शेयर वो होल्ड करेंगे, जो कि ओनर होंगे, वो ओनरशिप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बहुत ज्यादा रिस्क है, बिकॉज आपका प्रोजेक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, मार्केट पोटेंशियल उतना है या नहीं है, ये सब देखने के बाद अगर आपकी प्रोजेक्ट फेल हो जाती है तो वेंचर कैपिटलिस्ट का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, सारा कैपिटल उसका लैप्स खत्म हो जाएगा. सो बैंक क्रेडिट यहां पे देख रहे हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपको प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है ताकि आप आगे बढ़ सकें, और उसके प्रॉफिट को वो कुछ ना कुछ हद तक पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज वो इक्विटी शेयर होल्ड किया है, तो डिविडेंड आपको वहां पे देना पड़ेगा उसकी कंपनी के प्रॉफिट के पार्ट से. सो बैंक क्रेडिट, कभी कभी आपने देखा होगा कि कैश क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कैश क्रेडिट का, जो कि बैंक प्रोवाइड करती है टू बिजनेस. सो कैश क्रेडिट में जितना कैश आप विड्रॉ करते हैं, एक लिमिट फिक्स कर देता है बैंक आपको कि उतना रुपया ही आपको दे पाएगा बैंक, और उस लिमिट में से आपको जितना यूज करना है आप उतना यूटिलाइज कर सकते हैं, और उतना पे ही वो इंटरेस्ट लेगा, बाकी पे इंटरेस्ट नहीं लेता है. जस्ट लाइक लोन के बिल्कुल अलग है, लोन पे फुल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट कैश क्रेडिट में आपको जितना आपने विड्रॉ किया है बैंक से बस उतना ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा. सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. So a structure introduction of this units,
एंड जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टीवी लगता है वो आधा घंटा, मतलब 45 मिनट में लगता है।